Formation of Indian mountain we are going to study. Today I am going to tell you about the Himalaya formation. As we know that Peninsular India was a part of Gondwana land. जैसे कि हम जानते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है. When the Gondwana land was breaking into several pieces, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था गोंडवाना लैंड डिफरेंट पीसेस में फ्रॉम द अंगारा लैंड, द पेनिनसुलर इंडिया मूव्ड नॉर्थवर्ड. जो पेनिनसुलर इंडिया है नॉर्थवर्ड मूव करने लगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, द कंडीशन रीच्ड when there occur a collision between the Indian plate and the Eurasian plate. After some time, the collision take place between the Indian plate and Eurasian plate. The convergence of Indian plate with the Eurasian plate result in the formation of the Himalaya fold mountain. Okay guys, this is the how the Himalaya formed. And at the top of the Himalaya, Naga Parbat, and in the east side, Namcha Barua, in the west, northwest side, Kirthar range, Suleimani range, and Hindu Kush range. As you are see, this is the map of northern plain of India. Okay guys, let's move to the at the Himalaya mountain was a total length of about 2400 km in the east-west direction. The length of the Himalaya mountain from the east to west, it is about 2400 km. The width of Himalaya mountain is not uniform. जो हिमालय माउंटेन का विथ है ये यूनिफॉर्म नहीं है. इसका विथ जो है डिफरेंट है डिफरेंट एरिया में एट डिफरेंट रीजन. इन द वेस्टर्न पार्ट इट इज़ 400 किलोमीटर, while in the ईस्टर्न पार्ट इट इज़ 150 किलोमीटर. वेस्टर्न पार्ट में इसका जो विथ है 400 किलोमीटर है और इन द ईस्टर्न पार्ट इसकी जो विथ है 150 किलोमीटर है. हिल, मणिपुरी हिल एंड मिजो हिल. द इंडस रिवर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, द सांगपो रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय फॉर्म द gorge नेम्ड एज इंडस gorge, धियांग gorge respectively. Okay guys, the westernmost and the easternmost point of Himalaya is Naga Parbat and the Namcha Barua. जो वेस्टर्नमोस्ट साइड है उसको नागा पर्वत एंड द ईस्टर्नमोस्ट साइड ऑफ हिमालय इज नोन एज नमचा बरुआ. Classification of Himalaya mountain. Just we move toward the classification of Himalaya mountain. इसका क्लासिफिकेशन क्या है हिमालय माउंटेन का? The Himalaya mountain can be classified on the two bases. First of all, the basis of latitude, on the basis of latitude, and other is on the basis of longitude. Okay guys, on the basis of latitude there was Trans Himalaya, Greater Himalaya, Middle Himalaya and Shivalik Himalaya. The main question arises is that what are the significance of the Himalaya mountain? Explain. Guys, you have to tell. This is the question and you have to tell the answer of this question. Okay guys. There is other topic is Trans Himalaya. As you see in figure, the topmost line, this line is Karakoram range, other middle line is Ladakh range, and the third line is the Jaskar range. Okay guys, the Trans Himalaya is also called as a
Tibet Himalaya. Length of this Himalaya in the east-west direction is approx 1000 km and width is approx 440 km. And average elevation 6100 km to 6700 meter. 6100 meter to 6700 meter. It consists of Karakoram range, Ladakh range, Jaskar range and Kailash range as we studied earlier. Now we move to read about one by one about the ranges. First of all is Karakoram range. Karakoram range is also known as the backbone of Asia. Karakoram range को backbone of Asia बोला जाता है. Other is it is also highest peak is known as काराकोरम रेंज में ही एक हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है K2 Ascent and the height is 8611 km 11 meter sorry. It is also called as a Godwin Austen. The Pamir Knot is located to the north of Karakoram range. The two branches that come out from this Pamir Knot are Hindu Kush range in the west and the Kulum range in the east. इसी पामीर नॉट पे ही हिंदू कुश रेंज इन द वेस्ट में एंड इन द पामीर नॉट के ईस्ट साइड में कुलुम रेंज है. Many important glaciers like Siachen, Bako, Baltoro, Bathuro, etc. are located in this range. The Karakoram range is a strategic location which forms a boundary with the China and Afghanistan. Okay guys, okay, now let's move to the other topic that is known as Ladakh range. First is Karakoram range. Now we reach to the Ladakh range, located to the south of Karakoram range. Karakoram range के नीचे है, means south में है, known as Ladakh range. The two prominent peak of this range is Hermosa and Rakaposi. इसके टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है हरमोसा एंड राकापोसी. एक्ट एज द वाटर डिवाइड फॉर द सियोक रिवर एंड द इंडस रिवर. कैलाश रेंज इज कंसिडर्ड टू बी अ ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज विच इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न पार्ट. कैलाश रेंज जो होता है ये ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज का ऑफशूट है जो वेस्टर्न पार्ट पर लोकेट है. This line is from the Kulla. The highest peak of this range is Mountain Kailash. Now let's move to the next. Sorry. Jaskar range. Jaskar range located to the south of the Ladakh. Karakoram at the top, at the lower there is Jaskar range. Ladakh range के south में है. देवसाई mountain is considered to be the part of this range. देवसाई mountain जो होता है ये जस्कर रेंज के ही जस्कर रेंज पर ही है. Now let's move to the next topic, Greater Himalaya, also called as in. The height of mountain Everest is about 8,850 meter and it is located in Nepal. Other is Kanchenjunga. It is located in Sikkim and its height is about 8,598 meter. Other is the height of mountain Everest is about 8,850 meter and it is located in Nepal. Other is Kanchenjunga. It is located in Sikkim and its height is about 8,598 meter. Other is Nepal, etc. These are the highest peak of the world. These are the highest peak of the world. Okay guys,
ग्रेटर हिमालय रेंज स्टार्ट फ्रॉम द नागा पर्वत फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड एक्सटेंड अप टू नमचा बरुआ इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। जो ग्रेटर हिमालय है उसका जो रेंज स्टार्ट होता है वो नागा पर्वत से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड अप टू द नमचा बरुआ। हेलो गाइस, कल मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पासेज बताने वाला हूँ। तो आप लोग को बताना ये है कि मेरा चैनल आप लोग कैसा लगा ये पढ़कर, ये जानकर कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड कल हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट पासेस के बारे में बताएंगे जो हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में फॉर्म्ड होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।